Namaste, I am Dr. Meenakshi Soni, Faculty of Homeopathic Science, Department of Homeopathic Repertory. Today's our topic is rubric. Previously, we will discuss about the repertory and classification of repertory. Now we can study the rubric, word rubric. What is rubric? Rubric it is a converted form of the symptom. जो symptom हमें case taking में मिलता है, उसका जो converted form होता है, उसको हम rubric बोलते हैं. It means हिंदी में एक वर्ड बोला जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. ऐसे ही एक जो सिम्टम्स होते हैं, जो हमें बहुत सारे वर्ड्स में जो एक सिम्टम मिलता है, उस सिम्टम को हम कन्वर्ट करते हैं एक रूब्रिक के फॉर्म में. बिकॉज जब हम रिपर्टरी का स्टडी करेंगे तो रिपर्टरी में हमें जो मटेरियल मिलता है वो रूब्रिक के फॉर्म में ही मिलता है. रूब्रिक होंगे, रूब्रिक के साथ उसके दिए हुए मेडिसिन होते हैं. सो रूब्रिक इट इज अ कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द सिम्टम्स. जो भी केस टेकिंग में आपको सिम्टम मिलते हैं, उनको हम रूब्रिक में कन्वर्ट करने के बाद रिपर्टरी में मेंशन करते हैं. And origin of rubric is, a Latin word rubrica, repertorial expression of symptoms. Caption और हेडिंग यूज्ड इन रिपर्टरी. जितने भी रिपर्टरीज होते हैं उनमें हमें रिपर्टरी में रूब्रिक शब्द देखने को मिलेगा. जो रूब्रिक होंगे चैप्टर में अंडर में रूब्रिक अरेंज होते हैं, किसी में अल्फाबेटिकली होते हैं, किसी में एनाटॉमिकली होते हैं. तो ये सारे जो रूब्रिक होते हैं वो हमारे बॉडी के पार्ट से रिलेटेड होते हैं, उसकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, उसके नोसोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी को भी हम रूब्रिक में कन्वर्ट करते हैं. जनरली जो हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं उनको भी हम रूब्रिक में कन्वर्ट करते हैं. जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं क्लिनिकली जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसको हम रूब्रिक में कन्वर्ट करते हैं. पेशेंट जो बोलता है उस सिम्टम को हम रूब्रिक में कन्वर्ट करते हैं. मेंटल लेवल के जो सिम्टम्स हैं उसको हम रूब्रिक में कन्वर्ट करते हैं. तो द रूब्रिक इज रिपर्टोरियल लैंग्वेज. विद द हेल्प ऑफ दिस रूब्रिक वी कैन स्टडी द रिपर्टरी एक्चुअली. अब सब रूब्रिक क्या होता है? सब रूब्रिक इज द फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ रूब्रिक. जैसे कि किसी को ठंडी लग रहा है तो पेशेंट इज चिली. अब पेशेंट को ठंडी कब लग रहा है? उसको गर्मी में भी ठंडी लग रहा है, तो वैसे उसका रूब्रिक होगा पेशेंट इज चिली. बट सब रूब्रिक क्या है उसका? समर एग्रावेशन. तो समर एग्रावेशन दिस इज द सब रूब्रिक. सब रूब्रिक, एनी रूब्रिक बिलो सब रूब्रिक. सब रूब्रिक के नीचे अब कंडीशन क्या होगी? जब गर्मियों में उसे पंखा चलाते हैं तब ठंड लगता है, तो इसका मेन हो गया थर्मल रूब्रिक चिली. चिली के बाद उसका एग्रावेशन summer, that is sub rubric, and sub rubric fanning aggravation also, that is sub rubric. According to these symptoms we can give the ग्रेडेशन. तो ग्रेडेशन टू गिव वैल्यू टू द सिम्टम. किस सिम्टम को कितनी वैल्यू देना है ये हम हमारे सिम्टम की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी से डिसाइड करते हैं. सो दैट इज ग्रेडेशन. और इस ग्रेडेशन के अकॉर्डिंग ही हमें मेडिसिन को ग्रेडेशन देना होता है. कौन सी मेडिसिन को किस सिम्टम के लिए कितना ग्रेड देना है ये भी क्लिनिकली वेरीफाई होता है, मटीरिया मेडिका से वेरीफाई होता है और आपके ऑब्जर्वेशन से वेरीफाई होता है. For the precise rational selection of required rubric, as through familiarity with the construction of repertory and philosophical background is very essential. Okay, note this point. एक अच्छे रिपर्टरी को जब आप अपने फैमिलियरिटी करना चाहते हो, उसके साथ आप ऐसे होना चाहते हो कि जैसे ही देखा और हमें समझ में जाए कि कौन सी चीज कहाँ पर मिलनी चाहिए, तो उसका कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके फिलोसॉफी के बारे में आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट वी कैन स्टडी द फिलोसॉफी ऑफ द रिपर्टरी. हर रिपर्टरी का philosophy होता है. Every repertory has a particular philosophy. For example, if we are talking about the Kant repertory, in the Kant repertory that is totally depend upon the general symptoms. So the general is classified into two, as the mental general and the physical general, and third one is the particular symptoms. Common also included, but two symptoms, general and particular, are more important in Kant repertory. So this is the philosophical background of the Kant repertory. So we can decide as per the case, so which type of repertory we can use in this case. So first we can see the case and analyze the case and evaluate the case, and after classification we can see
which type of symptoms are prominent in the case, and as per the case we can select the repertory. So that's why I'm talking about the philosophy of the repertory. uh, After philosophy, first we know about the construction of the repertory, because if you don't know about the construction, so you cannot study the repertory properly. If you know construction, then you can search out the any symptoms in the repertory. So construction is too much easy. That is not difficult to remembering everything. First we can talk about the chapters in this repertory, how many chapters in the repertory, and what is the arrangement of the chapters in repertory, what is the arrangement of the rubric and sub rubric in repertory. So this is helpful for every repertory searching in rubric and the symptoms and for repertorization. So if we know about the construction and the philosophical background, so we can study the repertory properly. And every repertory has a particular philosophy, every repertory has a particular construction as per author, as per the need of the case we can select the repertory. So this is the rubric, and rubric, it is a converted form of the symptom. That is the language of the patient, and rubric, it is the language of the repertory. So with the help of these two type of language, we can create a similarity between the patient and the medicine. And repertory, it is a tool to create a similarity between these two. And we may adopt any of following method for the selection: direct selection, rubric search, interpretation, synonyms, cross references, synthesis of rubrics. Actually, this is the method. With the help of these method, we can select the particular medicine. First is the direct selection, where the patient is coming to you, and patient is narrate his symptoms, her symptoms, and directly you can choose these symptoms from the repertory if you are expert in repertory. So you can select direct rubric in this repertory. Second is the rubric search. If you have a patient case history, then you can create a totality, then you can convert the repertorial totality and search the rubric in the repertory with the help of different chapters. And you can search out rubric after total creating the totality, repertorial totality. We can select the medicine with the help of these rubrics. And third is interpretation. Interpretation means if you have some rubrics, so you can interpret, or if you have something missing, so then you can select another rubric for this particular symptom or particular rubric. Synonyms, if we are not able to see in the particular word and the particular rubric, so synonyms are also used. For example, if a patient is more happy, so happy is not found in your repertory, so you can take the cheerful, joy, myth, etc. Cross references also helpful for repertorization. If we are not found particular rubrics, so the cross reference given in bracket, the synonym in the synonym form, so you can see this cross reference where in which chapter these symptoms or the groups are given. With the help of cross reference, we can study about the rubric also. Synthesis of rubric, if we are not found any particular rubric, so with the help of two or three rubric, we can create a one rubric, single rubric, and select the particular medicine. So these are the method of adoption of repertory. With these help of these method, we can select the rubrics and create a repertorial totality. After creating a repertorial totality, we can select the medicine as per gradation. After repertorization, we can get a particular proper probable remedies group, and after probable remedies getting, we can select a particular single similar medicine with the help of organ of medicine and the materia medica. Then we can select a particular medicine and prescribe to the patient. That is the method, and these are the rubrics which are helpful for the repertorization. So for the study of repertory, rubric study is the compulsory. After case taking, we are doing rubric hunting, means searching of rubrics.
So there our topic is completed now. So our topic is completed, but the question is that which type of question coming from this topic. So 5 marks questions are coming from this topic. What is rubric? Explain it. That is the first question. Second question, explain the word rubric with example. And third question is the what is the synthesis of rubric. And fourth question is rubric hunting, talking about the rubric hunting. And in the viva and external examination, rubric hunting is that is commonly done by external examiner. We have given some repertories to the student and uh, टेल टू हिम और हर कि इसमें से रूब्रिक सर्च करिए, आप ये सिम्टम्स दे देते हैं, अभी इसको रूब्रिक में फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ये कहाँ पर मिलेगा. सो प्लीज डू स्टडी on basically the study about the philosophy and the construction of repertory, and then you can study the repertory properly. So आपके लिए रूब्रिक को सर्च करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा. So there now topic is completed. Thank you so much.